Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to Pakistan Tech Summit. I'm Asima Hassan. I will be moderating this session today with Dr. Suleman Shahid from LUMS. He's an assistant professor at LUMS in the computer science department, and he's also founder of UX Pakistan. We will talk more about his work in detail while he goes online with his presentation. So first of all, I would like to tell our viewers about the session, that how it's going to be. So we will have first the presentation from Dr. Suleman Shahid. After that, we will have fireside chat round where we will discuss more details about the VR technology in Pakistan and how it looks like. And in the last 20 minutes, we will take the QA, live QA. So if you have any questions, please do write them in the live comments in YouTube and in Facebook. We are looking at everything right now. So I would like to now welcome Salman Shahid, and thank you so much for taking out time. It's really an honor to have you here. So over to you, sir. Thank you. Thank you very much, everyone. I'm really happy to be a part of this wonderful, very ambitious, but also very fruitful summit, which is happening nowadays. And I think that this is really great to see so many big names and also early researchers as well as practitioners to sort of present and talk about their work. In my today's talk, I've been asked to sort of talk about my journey into VR, and more importantly, what LUMS is doing in the VR space, how to move forward, and how sort of can we explore this industry-academia relationship in this new context where sort of industry and academia needs to work together, and not only the capacity building but also for innovation and education. So I'll be in the first 15 minutes. I'll be talking about my journey, and I was talking to Asima that maybe it was after a decade that I reflected on that what I have done in VR, and it turned out that I'm quite old now. So I'll be talking about VR's cart and horse, and I'm using it as a metaphor. I use it as a metaphor for so many other things, but I think this is also very much relevant for this talk. And you can see some excellent old picture. I'll let you guess that where this picture comes from. So we are changing. We're living in a changing world where computers and technology is changing, and because of that, also individuals and their lives are changing, and also it has a bigger impact that societies and cultures are changing, and more importantly, the design is also changing. The way the whole the world is changing. It's going to have an effect, or is having an effect on almost everything. And I've been a part of this journey of this change, maybe from the last 20 years, maybe 23 years, when I started working as a computer scientist, started studying computer science. And I've seen a lot of these change, which has impacted the way we live, we work, we wake up in the morning, we grow old, and even, the way we sort of look at our life and quality of life and sort of survive in this world. And I think I'll reflect on that journey purely from VR perspective in this talk. So some of you might know that I work as an assistant professor in computer science at Lahore University of Management Sciences, LUMS. I'm also running a lab I'll talk about at the end of this talk. I'm also the Foundation Council member for National Incubation Center. I also manage LUMS Usability Lab, a Facebook Innovation Lab. And before that, I have done my degree from Aachen, Germany, and then from Eindhoven, the design school, industrial design school. And I've also done a degree, PhD in social psychology and human-computer interaction. And I was also an assistant professor back in Netherlands. So I remember that, the journey into graphics started with maybe DAWs, maybe I can say 1990, 1991, when I had my first computer, and I sort of started exploring this whole space of designing through MS-DOS. And I think when I went to the undergrad school, this graphics.h in C++ was something I thought was end of the world. I remember one of my very, very good friends, Ahmed Said, who's in Australia nowadays. We were a sort of a gang of two who would like spend nights in doing these great animations and graphics, and then try to sort of replicate 3D into 2D using graphics.h. And I think that was a fun time. He was, of course, much better than me, but it was a lot of fun. And then I remember the time came in late 90s when we learned about this VRML thing, a virtual reality markup language, and it was really again
fascinating that you can actually start making websites, and your browser would be able to render 3D, and you'll be able to navigate. You'll be able to make fun things, the complete shopping, streets, museums, your home, and everything else. I think that was also a great discovery, at that time. And I after that I graduated, started sort of went to industry. And industry, there was nothing to do with VR. It was all about business development, and a lot of information system design and everything else. So I had forgotten about VR, that I had some interest in graphics or VR. Of course, I had a lot of interest in design and UI, but I think the 3D and VR part was almost forgotten. And then I went to Germany, and I was very lucky that I got into Fraunhofer Fit. I was working in Aachen, studying in Aachen, living in Bonn, and then I got a graduate student research assistantship in Fraunhofer Fit. That was one of the best applied research centers in Germany. And I don't know if you can see my cursor, but this building, the third floor, was that is where my office was. That's St. Augustin Castle. And that's where my office was. And in that office, we had an amazing usability lab, and also we had a very, very interesting VR lab. And that is when I looked at that. You can sort of think about VR, think about beyond VRML. So it's not about the browsers, but there is a whole world out there, and people are taking VR very, very seriously. There are things like head-mounted display. And there are things like, you can make a complete immersion. You can have a backpack computer with like 15 different wires, and this is connected to your head-mounted display, and then you can actually walk. So we used to design games, and we'll sort of move around in this St. Augustin Castle. We'll have a treasure hunt game, a design for the castle. We'll have other games, and we'll try to sort of play with, VR. And then another thing I learned at that time was that there is another thing, and Fraunhofer used to call it this mixed reality. And that was back in 2004 when I heard the word mixed reality, that this is something that is not VR, this is not AR, and that's a combination of VR and AR. And at that time, I remember that my interest was more into AR and not into VR, because I thought VR was really not, it was cool, but I thought it was never sustainable in the kind of things I wanted to work on. So I designed a couple of games. I still remember one of the great, Lenovo at that time. It was IBM computers. I still remember the beautiful compact machine. Compact it was only 7 kg, and you would have a very nice backpack, and then you'll start searching this treasure hunt games in St. Augustin Castle. And I think one thing I learned at that time, that how your whole the way you interact with the system would change when the use case change, when the scenario change, when the need change, and when the purpose change. And I think that got stuck with me at that time, that how important it is to sort of replicate the same design process when you're designing for VR AR. And I'll come back to this at a later stage. So I think that's where I got into VR, and I got into AR. And I got an opportunity. I'm not going to talk about it in detail, but I got an opportunity to sort of, work on about a 30 million euros project in which we had to work with BSPP. It was Paris Fire Brigade. It was, Airbus. It was Skoda, the car company, and there was another work package with the medical industry. And we had to sort of make 3D interfaces with head-mounted display. And the work package I was working on, I was working with Paris Fire Brigade in Paris, and at the time we were trying to sort of write in firefighters' truck, trying to understand how the firefighter works, and then trying to replicate everything in a 3D immersive scenario so that we can train them. Back in 2005. And then I left Germany at that time. I got an offer. I had a full-time offer from Fraunhofer, but I wanted to study design, and I ended up, at this beautiful building again. Of course, I was studying industrial design, but the building was famous for research on presence, perception, and cognition. And that was a wonderful idea to sort of go back, from a technological mindset to the very basic mindset, that how the human brain works. And how the cognition happens, and how you decide, and how your
perception and cognition and motor all work together. And if you can't work on perception and if you can't work on cognition, how your motor impairment, how your motor would be impaired. So and the link between this complete whole loop, that there is a perception there is a cognition there is a motor there, and I think I had a great understanding. And then that's where I realized that the fundamental research is so important if you want to make an impact with VR. Without that, it would be almost useless. You can be a very cool tech company, but if there is not right use case and there is no research base, it would be a failure. And I think that building really helped me to sort of understand. And I used to spend some time, with a couple of professors on the perception research. And then I did a couple of studies also in the area of perception and cognition. Whether it's VR or it's robotics or it's other concepts. Then I got a chance to work for Philips, and that's another beautiful building. I think I love spaces, and that's why I'm bringing buildings, because these spaces helps you to sort of work in a very creative way. So these are open spaces. These are spaces which are designed for the purpose of innovation and research, and these spaces enable collaboration and creativity. And that's why I sort of want to bring spaces into this discussion, that without these spaces, you'll not be able to innovate. Very difficult to innovate, and then I started working for High Tech Campus, another amazing place. And I think one of my projects in High Tech Campus was actually on understanding human perception when it comes to a session migration. So when you move from a physical world to a virtual world, and when you migrate, a part of your brain also migrate there. And when this transition happens, if this transition is abrupt in this new reality, the users would be shocked and there'll be a surprise. And when there is a surprise, people don't appreciate it. So how would you reduce surprise in a sort of more systematic way? Again, that's very important. I know that these are little maybe on high-end things in terms of research, but I wanted to sort of again and again connect back to the research, because I think that's very important to keep in mind. And then I moved back to in Netherlands. I did my PhD, and then I was associated with Breda's VR lab, and we explored a number of different use cases. I was also associated with the VR lab in Soesterberg in TNO. That's an applied research center in Netherlands, one of the best research centers you can find in Netherlands. And then eventually I had a great opportunity to be a part of the team who made one of the best VR labs in Netherlands. That was in my university in Tilburg University. So initially I was a part of the team who actually looked at all the hardware, how the immersion would happen, a lot of other things. So I could not really work into that lab because I resigned because I wanted to move back to Pakistan, at that time. So I had a good permanent position, but then I thought the time has come to sort of move back to Pakistan and do something there. So that is where, I moved to Pakistan. And what I did in Pakistan, I'll get back to this later on. But what I wanted to sort of highlight now here is that what I learned during these 10 years, I have never been a serious researcher in VR. I always took it as a casual, free time, fun thing where I wanted to sort of spend my time in. But almost always I was interested in other areas than purely, innovating in the virtual reality. But nevertheless, I learned one thing, that VR is just another technology. It is technology like you make systems for computers, your mobile phones, your tablets, and similar to VR. It is exciting in so many ways, but it also has limitations in so many ways. It will work in so many scenarios, but it will also not work in so many scenarios. And there are proofs that it will have an impact, but there's enough evidence that it doesn't make any impact. It doesn't really. It's not better than mobile phone. It's not better than the actual reality. It's not better than a tablet. It's not better than your computer. There's so many studies. If I can start listing down, we can spend another 2 hours on that, which will show you that VR fails and VR fails and VR fails. It works, but then it fails. And when we say it works, because we have this first 100 days phenomena. We think it is working, but then it reaches to a point where it's no more working. So I think that's what the first thing I want to sort of say about it. This does bring smile, but then also brings lots of frustrations.
I think one needs to be very careful. Don't take it as a magical thing that it will always work because it's VR, because it's new. I think we need to sort of really look into that into a systematic way. And one of the things I always like about the technology is that the first 100 days, we make a lot of claims when we bring technology in. We think that will change the world. It's really about winning an election, winning a project, making the first product, coming up as a startup, and then making all these big claims that in the first 100 days, the world would change. And then only after 100 days, we realized that nothing would change, because this change is a very long-term process. This comes systematically. It requires a lot of mindset change. It requires a fundamental way we work with technology, we work with people. And when it comes to VR, it's really a big shift in the way we interact with the world. It's more than a tablet. It's more than your computer. So I think one has to be very, very careful what you claim about in the first 100 days. And second thing, I think, which is very important, with another metaphor, I'll not be able to spend more time on it today because I usually spend half an hour on this metaphor, on this horse and cart, that how to sort of bring them in the right order. What comes first and in which order. And I have thrown some keywords on the screen here, and based on my some work I've done, little work I've done in this area, is that even though you shift to this great new cool technology, it's still about people. It's still about people who are going to use this product. It's still about the purpose. Why do you want to make something? It can't be that you got a great headset out there and you start using it and you think the change would come. It's not going to happen. People would have the first 100 days effect. They will love it for the first 5 minutes, 7 minutes, 10 minutes, and then it's going to be back in the box because it has no impact. It's still about the process. You just can't start randomly design things. It is very, very important to be technology driven in certain part, because you want to innovate, you want to bring new things into the market. But fundamentally, it is also important to be people-centered and bring the empathy and same usability process into place, because it's about the process. It's about the content, it's about research, it's about impact and engagement. I'm going to spend a little bit more time on these issues. As I mentioned earlier, don't please forget, it's about people and it's about diversity of people. It's just not about one type of person, geek, first movers who will buy everything in the tech store. They're not the ones. There are very, very few people. They can make your thing work, but after that, भूल जाएं आप. आप इसके बाद भूल जाएं कि आपकी technology चलेगी. Of course, उसके बाद it's about purpose. Very often, I think we are stuck with games. Games. एक सुबह शाम दोपहर खाने के फौरन बाद एक game. And I think I love games. I like playing games, and games it makes perfect sense because of the $1 billion industry that you would like to innovate in games. But one has to understand कि अगर आपने masses के लिए जाना है और देखना ये है कि आपने 2021 के लिए design करना है, so what are the other scenarios out there? This just can't be games. And that's, I think, very, very important. People have other needs also. People want to do other things, and if you can sort of support those scenarios, why not? Second cheese process, same old, nice, good process which we learned in our first introduction to design thinking, or human-centered design, or whatever you call it, a digital design transformation ke andar. It's about discovery, it's about inspiration, it's about ideation, it's about design, and it's about implementation and delivery. So if you spend a lot of time on implementation delivery without a discovery, inspiration, without research, without empathy, yeah, good luck. Again, that's the same thing with IDEO would say. It's still about people. It's still about business. It's still about technology. But अगर आप इसी एरिया में रहेंगे क्योंकि मैंने $1 billion कमाना है और मैंने टेक से कमाना है और people के बगैर कमाना है, and I'm not saying ऐसा possible नहीं है. You can really push the tech, and you can be a great company, or Unity would buy you, or Microsoft would buy you, or Google would buy you because they want to support their tech VR revolution by designing state-of-the-art software. Like, for example, the way Oculus wants that, by designing state-of-the-art headsets, the way HTC want that, designing state-of-the-art interaction, other people want that. But not every startup would be able to do that, especially in Pakistani context. Unfortunately, I know we have limitations. यहाँ पे you ask people to make a game in Unity and ask them कि
ज़रा ये डिफरेंशियल इक्वेशन ड्रॉ करना, तो वो कहते हैं मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन ड्रॉ भी होती है, so we have these fundamental issues, and I think it was my issue when I studied. It's an issue of many of my friends, my students out there. So उस केस में सॉफ्टवेयर लेवल के ऊपर मैथमेटिकल जहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इनोवेशन के लिए इतना आसान नहीं है, लेकिन शायद यूज केस लेवल पे इनोवेशन करना निस्बतन आसान है. सो आई थिंक व्हाई नॉट, सो व्हाई नॉट उस पर आपकी उसकी तरफ जाए. और अगर आप देखें तो वीआर का डिज़ाइन प्रोसेस भी बेशक वो आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे, है बातें वही करता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है उसके अंदर. So and then content is the king. आप जो मर्जी कर लें, इतनी मर्जी अच्छी टेक्नोलॉजी हो जाए, if the content doesn't work, nothing works, क्योंकि आपका जो रिलेशनशिप है, sort of what we call this love marriage phenomena, वो content के जरिए, so it's beyond the surface. And finally research बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. रिसर्च के बगैर आप आगे नहीं जा सकते. तो प्लीज़ जब रिसर्च करें डिफरेंट यूज़ केसेस को एक्सप्लोर ज़रूर करें, चाहे वो आपके पास रिटेल में हो, चाहे वो आपके पास हेल्थ में हो, चाहे वो आपके पास एजुकेशन में हो, चाहे वो आपके पास एजुकेशन एंड एजुटेनमेंट के अंदर हो. मैं इनकी इसलिए बात कर रहा हूँ कि दीज आर द एरियाज जो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, चाहे वो आपके पास आर्ट के अंदर हो, चाहे वो आपके पास प्रोडक्टिविटी के अंदर हो. यू विल सी दीज एग्जाम्पल्स 2-3 साल के अंदर. Productivity and VR का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक होगा. People would pick VR because they will not like to look at the visualization on their computer. They would like to look at the visualization on their headset because it makes perfect sense कि आपके पास complex data है. आपने कहा है कि यार मैं Excel से बहुत बेहतर नहीं, VR में देख लूँ. So you will grab the VR headset, आप उसको पहनेंगे, आपका जो कैमरा होगा वेब कैम का वो आपके लिए एज इंटरेक्शन डिवाइस इस्तेमाल करेगा. आप इंटरेक्ट कर रहे होंगे अपने कैमरा से, मैक के कैमरा से, और आपकी इंटरेक्शन रिफ्लेक्ट हो रही होगी आपके हेड माउंटेड डिस्प्ले के अंदर हो रही होगी. इट्स अ वेरी नॉर्मल सिनेरियो. मतलब हम उसकी तरफ आई डोंट रियली सी दैट कि ये आज पॉसिबल क्यों नहीं है, कल पॉसिबल क्यों नहीं है. If I receive a big data, I'll just grab my cardboard, put my phone in, or maybe a headset जो कि Oculus का standalone आ गया है. I'll have it. I use my camera, gesture. Good life. Why not? So I think scenarios आगे बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं जिसको आप explore कर सकते हैं. And my last 2 cents, and then I'll quickly go back to my lab वाला part. कि don't forget AR. Of course मैंने बहुत VR की बात की है, but I still love AR. AR is the real beauty. In terms of going to the masses, and then of course don't forget MR, and that's mixed reality. इसकी एक अपनी वो मिठाई के डब्बे के अंदर बहुत चीजें होती हैं, तो depending on what you like, if you're a gulab jamun person, so the mixed reality is that gulab jamun phenomena, so that's the best out there. बड़ी मुश्किल से मिलता है क्योंकि कोई ना कोई आपसे पहले ले लेता है, but once you get it right, it's a great thing to have. Now, combining everything to very quickly in a couple of minutes, and then I'm happy to answer questions at LUMS. So at LUMS, मेरा जितना भी मैंने जो सीखा था चीजें, we have tried to sort of translate that in our lab, what we call CHISEL, Computer Human Interaction and Social Experience Lab. Our aim is to design a people-centered, user-friendly, culturally appropriate, and accessible digital technologies to improve the education and well-being of individuals or citizens. That's our key thing here, So ये हमारा एक important चीज़ है, and then उसके अंदर हमारे पास area of interest के अंदर interactive technologies हैं, assistive technologies हैं, हम UX पे काम करते हैं बहुत ज़्यादा, और जहाँ तक technologies का ताल्लुक है, we do a lot of mobile applications, we do a lot of AR, VR work, and we do a lot of desktop solutions. This is my usability lab at LUMS because I was very happy with the spaces. I had a pleasure and honor of working in different spaces. So we made our own space at LUMS. This is a usability lab. It has a see-through mirror. It has cameras. We invite participants in this lab, and then we run experiments with them, and we can remotely observe them, that how they are sort of responding to different technologies in this isolated space. We also have this Facebook Innovation Lab. That was funded by Facebook. It supports VR, AR-based entrepreneurship, learning, awareness, outreach, and it sort of wants to work as a hub in the community for outreach. And उसके अंदर हमारे पास Oculus Go का पूरी की पूरी बार है, हमारे पास Rift है, Quest है,
एंड इसमें हम ट्रेनिंग सेशंस भी करवाते हैं, हम इसके ऊपर आउटरीच सेशन पे भी काम करते हैं, और अभी हम उस पर मजीद काम कर रहे हैं. I can't play this video. And finally, I recently received a major funding to sort of, make another VR lab where we'll be spending about 10 million rupees on new equipment, new technologies, to explore new capabilities in VR at LUMS, to push the technology in collaboration with industry, and really, making this physical nice 3D space VR के अंदर लम्प बनाना चाहते हैं, और ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत गेमिंग को हम इस्तेमाल करना चाहते हैं as a medium for serious purpose. That's what we want to do. So that's from my side. Back to you, Asima. I think I took 5 extra minutes, but I'm happy to sort of move forward now. No problem. Thank you so much, Suleman. That was an amazing presentation. I'm so excited actually about all the things that you said and about the research and the content. That's like top notch. So following with the fireside chat, it's a follow-up question with the same presentation that you just gave, and the last important things that you're talking about LUMS. So as you have worked a lot in the research centers, like the world-renowned research centers in Europe already, so what do you think, how much it is important for the current institutes in Pakistan to focus more on innovation labs and R&D to bring all these high-tech technologies? I know LUMS is already doing great work. From last 1 year, we know about Facebook Innovation Lab, as you showed all of things with VR, MR, and AR that you're doing at LUMS. But what about the other institutes as well? What would be your message for the massive? I think agar aap, most of our people, I think anybody who is an assistant professor in Pakistan, at least in computer science or in electrical engineering, और अदर एरियाज ऑल्सो, चाहे वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर हो, सिविल इंजीनियर हो, आपका रोबोटिक्स के अंदर हो, मैकेट्रॉनिक्स के अंदर हो, बी इट टॉप यूनिवर्सिटी लाइक नस्ट और GIK, or LUMS, ComSats, because of the excellent presence in Pakistan, and other universities जो कि काम करती हैं, उनको almost every assistant professor knows कि अगर आपने एक serious PhD पे काम किया है और वो basic research से एक step ऊपर थी, उसमें किसी किस्म का fusion था applied research का, तो उसमें हमेशा इंडस्ट्री ने कोई ना कोई रोल जरूर प्ले किया. एक बड़ा कॉमन चीज़ है. आई थिंक ये किसी के लिए, मेरे लिए को बताने की जरूरत नहीं है. वी नो दैट. प्रॉब्लम ये है कि विद दैट माइंडसेट, मैनी ऑफ अस हु हैव वर्कड अप्रोच, व्हेन दे कम बैक टू पाकिस्तान, दोनों प्रॉब्लम्स आती हैं. आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर इतनी मैच्योर नहीं है, एंड आई डोंट ब्लेम देम. इट्स जस्ट दैट के इंडस्ट्री, मैं जर्मनी में मैंने 3 साल गुजारे हैं, 10 साल मैंने 14-12 साल गुजारे नेदरलैंड्स में. जो इंडस्ट्री के पास जो रिसर्च का बहुत सा फायदा आता है, वो घूम घुमा के कभी EU दे रहा है, कभी लोकल गवर्नमेंट दे रही है, कभी जर्मन गवर्नमेंट दे रही है, कभी डच गवर्नमेंट दे रही है. इट्स रियली फंडेड बाय द लोकल गवर्नमेंट्स. यहाँ आप होता ये है कि बिकॉज यू आर अ पार्ट ऑफ, you're far away, और you are BMW पे काम कर रहे हैं, या आप किसी और बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, या फार्मास्यूटिकल के अंदर है, तो आपकी इतनी रिसर्च, आपकी इतनी अच्छी अप्लाइड काम है कि आप उससे पैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, एंड देन यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग. इट्स चिकन एंड एग प्रॉब्लम. नो मनी, नो रिसर्च, नो इनोवेशन, नो मनी. So आपने somehow, somewhere you have to begin. So हमारा, I think that's where the academia industry partnership comes into play. I would say कि trust academia. I know हम थोड़ा स्लो काम करते हैं. I know हमारी अपनी प्रायोरिटीज हैं. I know कि हमारे अपने थोड़े से नखरे हैं काम करने के. लेकिन I think the time has come that we need to start working together. आपके पास इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, आप फ्रस्ट्रेट ना हो, आप एकेडमिया के पास जाएं, 1 दफ़ा जाएं, 2 दफ़ा जाएं, देखें. 1 दफ़ा काम नहीं होता, 2 दफ़ा नहीं होता, हो सकता है 3 ट्राइज के बाद आपको एक ऐसा फैकल्टी मेंबर मिल जाए जो जनरली अक्सर काम करना चाहता है. सो आई थिंक वहाँ से इनिशिएटिव भी आने की ज़रूरत है. एकेडमिया का प्रॉब्लम ये है कि हमारे बच्चे ये कहते हैं कि सर वो उस कंपनी में क्यों काम करें, वहाँ तो रिसर्च ही कोई नहीं है, वो आपसे डीप डंप काम करवाते हैं, ये करवाते हैं, वो करवाते हैं. एंड आई थिंक हमारे बच्चों का भी, आई वुड सर्टनली से कि you need to start somewhere. आप कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि द डे, मैंने जब रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया था, द डे वन people gave me a data entry task, or give me 10 research papers to read. You don't get the best thing. You don't get to sort of work with European Space Agency कि हमने अपना पेलोड भिजवाना है और उस पेलोड ने जाके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाके लग जाना है, तो उसकी हम मॉडलिंग करें, सुलेमान साहब जरा आके ना इस प्रोजेक्ट हमारी हेल्प कर दें. It doesn't work in this way. You have to really build your reputation. So I think दोनों तरफ मसले हैं और दोनों तरफ में इतना पेशेंस नहीं है. So I think पेशेंस के साथ काम करना ज़रूरी है, and that is where अभी गवर्नमेंट ने काम करना शुरू किया है कि they are forcing now कि अब आपने जो नई प्रपोजल्स लिखनी है उसमें आपके इंडस्ट्रियल पार्टनर्स होने चाहिए.
I think जितना ज़्यादा हम इसको promote करेंगे उतना ही ज़्यादा होगा, और that's the only way in my opinion to work in Pakistan. Yeah. Okay, that is perfect. That also answers my question, which I wanted to ask you about how to bridge the gap between academia and industry in Pakistan. So if the government is going to take initiatives and it's going to tell people like, yeah, industry has to work with academia and your next project has to work together, that will probably solve the problem that we have this gap between both. Okay, so coming back to LUMS again. So as you said that you have amazing labs, there's so much work going on in the LUMS. What are the opportunities for the students and the graduates if they want to look into LUMS and they want to work with you under your supervision? What are the opportunities currently? So, LUMS ke andar, I think one of the interesting things is that, of course, we have this VR infrastructure. And when we say infrastructure, ka matlab ye hai ki, when you come to our lab, it doesn't mean that we have to buy a new VR headset, or hamare paas wo high performance machines nahi hai, ya you want to work with an EEG sensor, so hame EEG sensor mangwana padega. You want to work with the physiological data, so hamare paas aapki aapki pulse ke liye ya aapke blood pressure ke liye, we got these things there. But all these are gadgets, उसके इर्द गिर्द आपने कोई ना कोई use case build करना है. So second चीज ये है कि we're working on interesting use cases. We got people like Dr. Murtaza Taj, we Dr. in double के अंदर double electrical engineering अंदर we people are working in healthcare, other scenarios में जो के different किस्म के projects पे काम कर रहे हैं जहाँ पे computer vision, computer graphics and VR AR को combine भी किया जा सकता है. So if you have a serious interest in VR AR, but you also serious researcher जो computer graphics and CV में भी काम करना चाहते हैं, you can come as a research intern in summers जो कि हमेशा offer करते हैं. You can apply for a PhD position. हर साल हमारे पास बहुत serious PhD positions आती हैं. अभी हमने 40 के करीब PhD position applications हमारे पास आई हैं, 70 applications आई हैं. अभी हम PhD students रख रहे हैं. You can also come as a intern जो कि semester में हमारे साथ काम कर सकता है. You can send us applications. अगर आपने ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन एंड डिजाइन के इंटरसेक्शन पे काम करना है VR AR पे, आप मेरे पास आ जाएं. आपने कंप्यूटर विजन और VR AR पे करना है, आप किसी और के पास चले जाएं. कंप्यूटर ग्राफिक्स पे करना है, किसी और के पास चले जाएं. AI मशीन लर्निंग पे काम करना है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ VR AR, आप किसी so this menu is out there, so आपने अपनी मर्जी से, it's a buffet out there, so आपने पिक करना है कि आपने उस बफे में से क्या चीज पिक करनी है. So I think that's one thing out there. Second चीज ये है, I love food, that's why I always give examples of मिठाई or buffet or whatever. And second चीज ये है कि it's open. ये बिल्कुल एक गलत सिनेरियो है या गलत परसेप्शन है लम्स के बारे में, अनफॉर्चुनेटली, और हमारे बारे में भी, कि लम्स में हमेशा लम्स के बच्चे ही जाते हैं. बिल्कुल ऐसा नहीं है. मेरी लैब में इस वक्त 18 के करीब RAs काम कर रहे हैं, जिसमें तकरीबन 10 के करीब लम्स के बाहर के हैं. फास्ट के हैं, नस्ट के हैं, कॉमसेट्स के हैं, GIK का है. So it's pretty common for us to hire people. We just hire people who are the best, who know their work, and we're blind to your degrees. We are blind to your institution. ये हमारा, it's not कि लम्स के बच्चे को प्रायोरिटी देनी है. Of course, it helps लम्स के इसके बच्चे को RAship मिल जाए, but I think that's a very wrong thing कि हम ऐसा करते हैं. बिल्कुल भी नहीं है. So we welcome. आप लम्स में हम सबकी प्रोफाइल जाके देखें, अप्लाई करें. We would sort of love to sort of entertain and go forward with this. Why not? That is perfect. That is really helpful. And I think किसी ने हमसे लाइव कमेंट में ये पूछा भी है इसी चीज के बारे में कि कैसे वो पार्ट बन सकते हैं लम्स का. So I think डॉक्टर सलमान ने आपके क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी दे दिया है बहुत अमेजिंग तरीके से कि आप अप्लाई करें. If you have the skills, you will get hired. So please do that. अब मेरा next question होगा इस बारे में कि as a game industry experts, like for example, being representative of IGDA Pakistan, I would like to ask you, how can we, as like studio or industry standpoint, we can help and bring all those graduates and students into the industry? How can we do this collaboration? Like, what do you think? What is the solution for that? देखें आसिमा, आपने जर्मनी में काम कर रही हैं इस वक्त, एंड I know your institute very well, जो कि न्यूरो रिहैब पे काम करता है, और that's exactly one of the things I work on. I work on VR for dementia, for Alzheimer. I work on VR for autism. I work on AR for dyslexia. We work on mental health, anxiety issues in VR के अंदर. We work on so spectrum पर काम करता है. वैसे मेरा focus VR के ऊपर ही है. And one of the things you will see, be it Europe ho, USA ho, Australia ho, even Singapore ho, आप अगर Hong Kong चले जाएं, Seoul चले जाएं, Shanghai चले जाएं, there are
the cheapest and the easiest way to begin with, and excuse my language, is to use students as a cheap labor. And really excuse my language. And we always used to say that, I've been used as a cheap labor. And I love to be used as a cheap labor when I'm a student. And that is that कि यार मैं MS thesis करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ मैं एक अच्छा मजे का काम करूँ. Could you please go supervise me? एक इंडस्ट्री का बंदा आए, वो कहे कि मैंने एक थीसिस को सुपरवाइज करना है, ये मेरा प्रॉब्लम है. आप एकेडेमिया में जाएं, प्रोफेसर से बात करें, उनसे कहें कि इस थीसिस को हम कैसे सुपरवाइज कर सकते हैं. एंड स्टूडेंट्स वुड रियली लाइक दैट. आई मेरे पास, मुझे तो पिछले 4 साल में, शायद मैं इतना मशहूर आदमी भी नहीं हूँ अनफॉर्चुनेटली, मुझे तो कभी किसी ने 4 साल में नहीं अप्रोच किया, कहा हो कि जी मेरे पास ये प्रॉब्लम है और मैं चाहता हूँ कि HCI के अंदर सवाए couple of people, for example, जो इन्होंने मुझे 2 दफ़ा अप्रोच किया कि स्टूडेंट से काम करना है, almost never came to me कि उन्होंने कहा कि जी ये थीसिस, ये मेरा आइडिया, could you please offer it as a thesis, या अपने बच्चों को ऑफर करवा दें. बहुत कम ऐसा होता है. हमारे पास तो कभी 50 रिक्वेस्ट नहीं आई, उधर तो बहुत ज़्यादा आती थी. मैं फ्रॉम हुफर में था तो 50 इंडस्ट्री के लोग बैठे होते थे, कहते थे कि आप ये कर देंगे, कर देंगे, कर देंगे, कर दें. सो आई थिंक फर्स्ट थिंग इज कि गेम इंडस्ट्री, आपके पास इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स है और आपको लगता है ये है कि वो अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, वो सिक्योर नहीं है, वो सेफ नहीं है, उसको एप्पल की फिलॉसफी इस्तेमाल करते हुए हमारे बच्चों से सिर्फ बटन पे काम करवा दें. ये ना बताएं कि बटन आईफोन में लगना है या आईपैड में लगना है. सो आप ये कहें कि आपने ये बटन बनाना है, एंड प्लीज हाइड फ्रॉम अस कि ये आप कहें कि मैंने यूनिटी को पुश करना है. मैं चाहता ये हूँ कि यूनिटी की जो रेंडरिंग है वो जब क्रोम के अंदर वो रेंडरिंग बेहतर हो जाए. दैट्स इट. वो आप बच्चों के पास आए, उनको ये प्रॉब्लम्स दें, उनको भी सिखाएं, खुद भी सीखें और विन विन सिचुएशन करें. आई थिंक दैट्स द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग. इसमें ना पैसे चाहिए ना कोई और चीज़ चाहिए. सेकंड चीज़ क्या आती है? सेकंड चीज़ ये आती है कि स्टार्ट वर्किंग पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम स्टार्ट करें. ठीक है, समर के अंदर बच्चों को 3-3 महीने के लिए हायर करें. आई नो कि लाहौर के अंदर 1-2 गेम स्टूडियोज हैं जो हमारे बच्चों को हर समर में हायर करते हैं, एंड देन स्टूडेंट पीपल लाइक दैट. आई थिंक सेकंड चीज़ ये है. और तीसरी चीज़ ये है कि ग्रेजुएशन के बाद भी बाज़ लोग 3-3 महीने, 6-6 महीने की चीज़ उस पर लोअर रेट के ऊपर इंडस्ट्री पे काम करने को तैयार है, वो करने को तैयार है. आई थिंक इन दिस केस दिस इज़ मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंडस्ट्री टू सॉर्ट ऑफ, क्योंकि हम ज़्यादा विजिबल हैं. आपको पता है कि हम क्या काम कर रहे हैं. आप ये ढूंढना कि लम्स में कितने CS के प्रोफेसर हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है. लेकिन हमारे लिए ये ढूंढना कि आपकी कंपनी के अंदर कौन कौन सा इंटरेस्टिंग काम हो रहे हैं गेम VR के ऊपर, वो इम्पॉसिबल है क्योंकि वो आपके रिसर्च प्रोजेक्ट्स है. सो आई थिंक अगर आप इनिशिएटिव लें, हमारे पास आए, आई थिंक मेनी पीपल वुड बी इंटरेस्टेड. दैट्स द फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट मेरे ख्याल में. That is really good. I completely agree with that. ये जो कल्चर है इंडस्ट्री और एकेडेमिया के बीच में कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करें इंटर्नशिप्स के थ्रू. आपके ग्रेजुएट जब हायरिंग होनी है, इंडस्ट्री को पता चले कि भाई कौन सी रिसर्च लैब है जो इतना अच्छा काम करे कि उसके ग्रेजुएट्स हम हायर कर सकते हैं अभी, ताकि हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें. ये बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा है. अच्छा, अगर इसी को मैं फॉलो अप करूं तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि अगर फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं हमारे, हर किसी ने मास्टर्स नहीं किया हुआ, हर किसी ने PhD नहीं किया हुआ, बट दे आर लाइक द वेटरन्स, उनका 15 साल का एक्सपीरियंस है, वो अमेजिंग गेम्स पे काम कर चुके हैं. सो वो कैसे एकेडेमिया का पार्ट बन सकते हैं? फॉर एग्जांपल एट लम्स, अगर वो आपके साथ करिकुलम पे काम करना चाहते हैं या वो आके वहां पढ़ाना चाहते हैं, या कोई एक स्पेशल स्किल सेट है हमारे वेटरन्स के पास, लाइक जैसे ग्राफिक्स डिजाइनिंग, ग्राफिक का कोर्स है पूरा, ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग है, तो अगर वो पढ़ाना चाहते हैं क्योंकि उनका इतने सालों का एक्सपीरियंस है, तो वो कैसे पार्ट बन सकते हैं? बिकॉज इट्स अ टू वे थिंग. जी बिल्कुल. आई थिंक यू ब्रॉट अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग हियर, एंड आई एन एक्सक्यूज आवर माय cheap publicity नहीं है. We have another very interesting avenue at LUMS, and what we call is LUMS Continuous Education Center. ठीक है, और उसके अंदर होता ये है कि उसमें हम कहते ये हैं कि इफ़ यू गॉट अ ग्रेट कोर्स आइडिया जो कि मैसेज के लिए बहुत बहुत वैल्यूबल है, आप प्लीज़ अपनी प्रपोजल लेके हमारे पास आएँ. LUMS का प्लेटफॉर्म हम आपको देंगे टू ऑफर दैट कोर्स. So अगर आपके पास, if you think somebody in the industry with a 15 years experience, he or she can teach a great course on an applied nature जो कि 50 या 100 students के लिए interesting होगा, you come to us. LUMS is also opening a new platform, LUMS X के नाम से, जिसको I'm running, I'm sort of managing that platform. और उसमें हम कर ये रहे हैं, जिस तरह MIT X है, Harvard X है, उस तरह ही LUMS X का platform होगा. और उसके अंदर भी we want to have this skill based course advertise in a form of MOOCs, massively online courses through that platform. तो उसमें भी सिर्फ ये नहीं है कि आपने सिर्फ लम्स की फैकल्टी ने कोर्स पढ़ाने हैं, बाहर की फैकल्टी भी कोर्स पढ़ा सकती है. That's one way of doing it. So you're very welcome. If you have a cool idea, please email me. I'll be happy to connect you with the right people. And you never know, you'll be able to teach a course at LUMS जो कि आपकी expertise के ऊपर है. Second चीज़ ये है कि we do, for example, मेरा जो HCI का कोर्स है या मेरा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स है,
it has been designed in collaboration with couple of people in the industry. यानी मेरा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स है उसमें हर वो टूल मैं वो इस्तेमाल करता हूँ जो उसका इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है, बी इट जिरा, बी इट स्लैक, बी इट ट्रैलो, बी इट असाना, बी इट गिटहब, ये सब के सब टूल्स वो इस्तेमाल करता हूँ जो इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड है, ठीक है। और बच्चे वो सीख के निकलते हैं। और मुझे तो पता कैसे चला, इंडस्ट्री ने बोला ये कि सुलेमान मैं आपके बच्चे को तभी हायर करूंगा, करूंगी, मतलब विल डू दैट व्हेन यू नो वी यू हैव योर स्टूडेंट्स नो दीस थिंग्स। Similarly, you know, for HCI course, we do the same things. So I think we are very open also. If you think कि हमारे graduates में systematic मसले हैं, we invite people on our open house. We invite people to sort of help us and work with us. CS department is very, very open-minded. At least I can say on the behalf of my department. If you have any suggestions, you think our students have systematic issues and these things needs to be fixed, and we hear all these compliments as well as complaints about our students, and we are open to that. So I would say दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं, हम दोनों करते हैं, कोशिश करते हैं। लेकिन yeah, let's see how it sort of unfolds in the future. That's good, perfect. ठीक है, चलें अब हम चलते हैं लाइव क्यूए की तरफ, क्योंकि हमारे पास काफी सारे क्वेश्चंस आ गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए है सुलेमान के, कैन AR and VR provide alternate to physical practicals held in schools and colleges, the era of online schooling? For example, कि हम AR और VR को यूज कर सकते हैं स्कूलिंग के अंदर करंटली? जी, VR को देखें, I think it's really about equity के issues हैं। equity के issues इसलिए हैं कि आप who can afford that, you know, so आप और कितना, is it for masses or not? So a part of my life, you know, मैं during my PhD and before that, अभी भी मेरा, अगर if you look at my publications, so 1/3 of my time is still spent on robotics and robotics in educational context, you know. So I work in the area of social robotics and robots कैसे teacher को as a, not as a replacement उनको इस्तेमाल हो सकते हैं। And almost every time we raise this question कि वो वक्त कब आएगा जब robots हर क्लास में अवेलेबल होंगे, और हमें पता है वो भी नहीं आने वाला। You know, in a similar fashion, I think VR is a great tool. वो आप कॉम्प्लेक्स चीज़ों को समझाने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन शायद वो मैसेज के लिए इमीडिएटली पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में एप्लीकेबल ना हो। AR का फ़ायदा ये है कि मैं जेब से फ़ोन उठाता हूँ और एंड द मैजिक बिगिंस, यू नो। अब मैं जेब से फ़ोन उठाता हूँ, अपने टीचर से बात कर रहा हूँ और मेरे माथे पे उसका आंसर आ जाता है। यू नो, आपने वो गेम्स देखी हैं अभी, there are so many scenarios, you know, these games can be used. So AR is sort of equity के perspective से आपने देखा है कि it's a very sad thing कि हम समझे ये थे कि online education would help in going to the masses, लेकिन उसका inverse क्या हुआ है कि online education एक fundamental आपका equity का problem raise करना शुरू कर दिया है कि लोगों के पास serious access के issues हैं। You know, वो जब आप कैंपस पे आते हैं तो डजंट मैटर कि आप गिलगित से हैं या बलूचिस्तान से हैं या पंजाब से, सब बराबर है। लेकिन द मोमेंट यू गो बैक टू योर टाउन, आप सब अमीर और गरीब हो गए हैं, आप सब यहाँ से यहाँ पे आ गए हैं, क्योंकि एंड देन आई थिंक दीज एक्विटी इश्यूज आर फंडामेंटल फॉर कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, एंड इफ वी डोंट एड्रेस दोज इश्यूज आई थिंक दे आर गोना हॉन्ट अस इन कमिंग। सो माय आंसर वुड बी कि कुछ टेक्नोलॉजीज easily you know can go for the masses, and for a country like Pakistan that's a great starting point, but for me as a researcher sometimes I don't want to think about 2021, sometimes as a researcher I want to think about 2025, and that is where I really want to sort of explore कि VR का क्या potential होगा 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, futuristic scenarios में क्या होगा, speculative scenarios में क्या होगा। So I think both these things needs to go hand in hand. ओके, परफेक्ट, दैट्स राइट। सो आगे फॉलो अप क्वेश्चन उन्हीं के से है यही कि क्या आप बता सकते हैं कौन से ऐसे हॉट रिसर्च एरियाज हैं कंप्यूटर साइंस में जिसके अंदर काम किया जा सकता है? फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट VR। जैसे आपने कुछ यूज केसेस ऑलरेडी अपनी प्रेजेंटेशन में मेंशन किए हैं, क्या आप उनको जस्ट हाईलाइट कर सकते हैं ताकि गेम्स के अलावा भी लोग सोचेंगे ये 5-6 चीजें हैं जिसपे हम इनोवेशन ला सकते हैं? जी, आई थिंक देयर आर मेनी सिनेरियोस। अगर आप देखें इस वक्त पाकिस्तान का startup landscape, I've been a part of this very proudly, this National Incubation Center जो LUMS का है as a foundation council member, and Usability Lab as well as you know Facebook Innovation Lab, दोनों उसी का ही पार्ट हैं। तो and उसके अलावा Makers Lab हमारे पास बहुत ज़बरदस्त है। I think the best Makers Lab in Pakistan is with NIC Lahore. तो you know, so इस सब को ज़हन में रखते हुए you know हमने देखा ये है कि ऐसा नहीं है कि लोग different scenarios को explore नहीं कर रहे, बिल्कुल कर रहे हैं। I was in NIC Islamabad, जहाँ पे मैंने देखा कि बहुत couple of very interesting startups were exploring VR for architecture. You know, आपने मॉडलिंग करनी है, आपने लोगों को बताना है कि घर कैसे लगेगा, you know, typical standard architectural scenarios जो VR में आ सकते हैं, लोग उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। मुझे लगता है ये है कि
if I had some money to invest in, और मुझे कोई कहे कि आपने bet लगानी है कहाँ पे, VR would be really really great. I think my first bet would be health, and second would be military slash training. So ये दो areas मुझे लगता ही हैं कि maximum impact. The kind of immersion and the richness of presence you required both for these scenarios, जिसमें आपको high risk situated training चाहिए, उसमें VR does an amazing job, and health के अंदर it can also do an amazing job. इसके अलावा education में इसकी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं complex के अंदर, and you can also look at health and education के intersection पे interestingly, वो भी आप explore कर सकते हैं. That's a very very interesting scenario. Architecture मुझे लगता है ये कि बड़ा interesting scenario है, लेकिन शायद you might not be a millionaire very soon in architecture. मुझे उसके use case में थोड़ा लगता है कितना शायद, but again I'm not a business guy, so I can't comment on these things. लेकिन मुझे ये लगता है कि दो तीन scenarios बहुत अच्छे हैं. और जो हम अभी लम्स में नई लैब बनाने जा रहे हैं, जो मैंने बताया कि we'll be spending about 30 million rupees in VR space in the next couple of years. तो उसके अंदर हम our major focus would be on VR for training and VR for health. Yeah, so these scenarios can. And sorry, one thing, Asim, I would say कि games का ऐसा नहीं होता कि जब आप serious purpose के लिए काम कर रहे हैं तो games निकल जाती हैं. जो gamification है as a core still stays there. So it doesn't. If you love games, it doesn't mean that you have to kill your fun for games and then only be able to serious कोई काम करना है because आपने hospital में काम करना है. So I think you just sort of combine these things also. Yeah. That's completely true. I worked in games and I did move to VR, so I can completely understand that कि ये बहुत helpful होता है कि आपके पास gaming knowledge हो, because 80% of the time you're kind of doing the same thing. You need to have all the concepts of the games, and then you're deploying it, and your use case is different now कि आप health की तरफ जा रहे हैं, military की तरफ जा रहे हैं, tourism की तरफ जा रहे हैं, कहीं और. तो use cases बहुत ज़्यादा wide हैं. जैसे सलमान ने कहा है, आप उनके बारे में सोचें. Innovation अगर लेके आनी है तो आप new cases के बारे में सोचें, ना कि आप follow up करेंगे जो already trend चल रहा है वही वाली हम game जो है वो VR के अंदर बना दें. कुछ नया लेके आना है तो आप बहुत सारे यूज केसेस कर सकते हैं जिसमें हम सबको हेल्प होगी. सो इसी के आगे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जो लोग गेम से आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल जिन्होंने मोबाइल गेमिंग में काम किया, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में क्योंकि मेजॉरिटी मोबाइल गेम्स में है, उनके लिए ट्रांजिशन करना वीआर के अंदर. सो व्हाट वुड बी योर फर्स्ट 3 टिप्स फॉर देम कि when they are coming to the VR, what they should focus on? So उनके पास I would say कि technical knowledge तो है, they know how to work in Unity or Unreal, मोबाइल प्लेटफॉर्म का भी है, उनको थोड़ा सा यूज केसेस भी आइडिया है कि गेमिंग के अंदर मैकेनिक्स कैसे होते हैं, बट VR के अंदर कौन सी वो 3 चीजें हैं जो उनके लिए बहुत जरूरी है वो फोकस करें? देखिए, I would say कुछ चीज़ें फंडामेंटल है जो मैंने आपको पहले अपनी वो हॉर्स एंड द कार्ट स्लाइड पे दिखाई है. I think उसके बगैर तो आप आगे नहीं जा सकते, and that is that you can't really forget the purpose and the people वाला पार्ट जो है, and the process वाला पार्ट, वो तो आपका फंडामेंटल है ही है. जब आप ट्रांजिशन करते हैं, a lot of the times what we have seen कि लोग वही एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं कि क्योंकि people would respond to a VR in a similar fashion as they respond to a mobile game, और ऐसा बिल्कुल नहीं है. Because very often when we design for games, unfortunately we design for addiction. We design for engagement. And addiction maybe in a positive sense. अब PUBG खेल रहे हैं, उसको positive के negative के, we're going live. I don't want to be critical about it. Yeah, Facebook है, अब we're going live on there. But these technologies are designed for addiction. इनके DNA के अंदर ये है कि they want to eat your time. So आप जब उसके लिए डिजाइन करते हैं, ये same philosophy and phenomena VR पे वैसे चलता नहीं है. क्योंकि people don't really respond to that. क्योंकि sometimes it's just too real. And that reality, वो जो uncanny valley है का concept है, वो आपको kill करना शुरू कर देता है, मार देता है आपको. So I would say कि पहली बात तो ये है कि आप पढ़ने की आदत डालें. Go back and read about VR in a holistic manner. In terms of the applications, in terms of use cases, in terms of architecture, and more importantly, think about how the human mind works, how the human brain works, how the perception works, and how people perceive things. आप इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लें कि मैं एज अ ह्यूमन बीइंग इस पूरी दुनिया को मैं कैसे स्कैन करता हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो होने वाली है. क्योंकि आपने किया क्या है इन द केस ऑफ AR रेगुलर टेक्नोलॉजीज, आपने
जो रियलिटी थी उससे आपने डिस्कनेक्ट नहीं किया, वीआर में सब आपने डिस्कनेक्ट कर दिए। तो इसलिए अब आप इतने इतने खौफनाक किस्म के लोगों के रिएक्शन देखेंगे वीआर के अंदर कि देयर आर वेरी स्ट्रिक्ट एथिकल गाइडलाइंस कि आपने लोगों को वीआर में एक्सपोज कैसे करना है, आपने कितनी देर के लिए एक्सपोज करना है, आपने किस एप्लीकेशन पे एक्सपोज करना है। तो आई थिंक पहली बात तो ये है कि पढ़ने की आदत पढ़ें और कोशिश करें कि अंडरस्टैंड करें कि इसके ऊपर आपने कैसे काम करना है। सेकेंड चीज़ ये कि एज यू विल डू एज अ फ्रेश ग्रेजुएट एक्सपेरिमेंट करें। एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट इस तरह करें कि थिंक अबाउट क्विक यूज केसेस, और उन यूज केसेस के ज़रिए आप घर में प्लेफुल तरीके से बिफोर यू स्टार्ट अ सीरियस प्रोजेक्ट उसको एक्सप्लोर करें, ताकि यू गेट सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैं गलती कहाँ पे कर रहा हूँ। और तीसरी चीज़ मेरे ख्याल में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि technologically भी there are still lot of limitations, and these limitations come into play because of the intersection of hardware and software. ठीक है, so I think it's also very very important to look deeper कि आपकी hardware and software की आपस में how do they sort of talk to each other. And finally, please pay attention to the design/interaction part. ये जो interaction है VR के साथ, ये बिल्कुल एक अलग दुनिया है। ये आपके पास कभी ऑकुलस रिफ्ट की इंटरेक्शन आ जाएगी, कभी आपके पास HTC वाइव की इंटरेक्शन आ जाएगी, कभी आपके पास वॉइस की इंटरेक्शन आ जाएगी, कभी आपके पास आइस की इंटरेक्शन आ जाएगी, और कभी आपके पास कोई इंटरेक्शन नहीं आएगी, आपकी ब्रेन वेव से आपका सिस्टम कंट्रोल हो रहा होगा। अगर आपने अपने कंटेंट और आपने इंटरेक्शन के दरमियान एक एब्स्ट्रैक्शन की लेयर ना लाई और आपने उसको बहुत रिजिड कर दिया, तो आपको हर दफ़ा नई डिवाइस में मूव होने के लिए पूरे का पूरा मॉडल दोबारा सोचना पड़ेगा, और वो एक तबाही ले आएगा आपके लिए। यू विल नेवर बी एबल टू प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो उसके बारे में ज़रूर सोचें। आई थिंक ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने सिस्टमैटिकली देखी हैं। अगर इस पर तवज्जो दी जाए तो एटलीस्ट मेरी लैब में तो ख्वारी कम ही होगी, बाकी मुझे पता नहीं है, लेकिन एटलीस्ट वी हैव अ गुड रिलेशनशिप इन आवर लैब। ओके, दैट इज परफेक्ट। सो आपने जो कहा है उससे तो मुझे यही लगता है कि हमारे जो पाकिस्तान में गेम्स इंडस्ट्री है या जो भी कंपनीज इस पे काम कर रही है AR VR या MR के अंदर, उनको डेफिनेटली अपना एक छोटा सा ना रिसर्च टीम भी बिठानी चाहिए। और ये जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं या जो करंट स्टूडेंट्स हैं जो रिसर्च एरिया में काम कर रहे हैं, जैसे बड़े इंस्टीट्यूट्स में नस्ट, लम्स, जीकी, कॉमसेट्स, इन सब फास्ट में, इन सब में से और भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें इंस्टीट्यूट्स में इतने अच्छे लोग काम कर रहे हैं, उनको हायर करना चाहिए रिसर्च के लिए। क्योंकि डेवलपर्स तो हमारे माशाल्लाह से बहुत चीते होते हैं, लाइक देयर आर सो मेनी ऑफ देम, काम कर रहे हैं यूनिटीज, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पकड़ा दो, दे कैन डू एवरीथिंग। बट व्हेन इट कम्स टू रिसर्च एंड डिजाइन, उसमें हम थोड़ा लैक करते हैं, इनोवेशन क्योंकि वहीं से आती है। सो अगर हमारी इंडस्ट्रीज पे भी फोकस करके जो आप करंट स्टूडेंट्स को हायर करें रिसर्च के लिए, इंटर्नशिप्स दें उनको जैसे सर ने कहा है कि प्रॉब्लम्स दें और हम उनको सॉल्व करेंगे। So that will really make a good, relationship between academia and the industry. Okay, अब हमारा next, I would say जो best question है, जो कि हम really जानना चाहते हैं कि please do mention about future of AR and MR in period of 5 years in Pakistan. Where do you see Pakistan in 5 years इन दोनों technologies में? इस पे हम time लगाएंगे अभी। देखिए, I would not be able to comment on that question. I've seen a lot of VRs की wave. मुझे जब I remember 2000 के अंदर जब पता चला एज अंडरग्रेड स्टूडेंट की VR आ गई, हमने कहा तबाही आ गई, अब तो कमाल हो गया। अब तो इसके बाद तो VR हो जाएगी। पता चला कि बाद में VR का नाम ही कोई नहीं लेता था। एंड देन द सेकंड वेव ऑफ VR केम इन एंड आई थॉट कि दिस इज कमाल हो गया। एंड देन आई थिंक ये जो पोस्ट ऑकुलस आपका जो टाइम आया है 16-15 के बाद, और जिसके बाद अब हम बिकॉज ऑफ द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ हार्डवेयर, उसकी वजह से जो चीज़ें आई हैं, लगता ये है कि कार्डबोर्ड स्टाइल चीज़ें वुड बी मोर रियलिस्टिक। एंड आई थिंक ये अब तो आपके पास स्कूल्स में और यूनिवर्सिटीज़ में और हर जगह इनका आना कोई बहुत कॉमन बात है, कोई मसला होगा नहीं। और AR तो वैसे ही आपको पता है कि लुक एट द वे AR कोड के ऊपर, चाहे वो एप्पल हो और चाहे वो आपका एंड्रॉयड हो, and now they are focusing on these looking at the process, आपके मदरबोर्ड लेवल के ऊपर सोच रहे हैं कि आपने कैसे एम्बेड करना है AR की प्रोसेसिंग को। सो आपके पास तो अब हार्डवेयर पे सपोर्ट आ रही है, तो ये ऐसा है ही नहीं कि आपने इसको सॉफ्टवेयर लेवल पे रेंडरिंग करनी है, सपोर्ट करनी है। सो AR तो ये DNA का पार्ट बनने जा रहा है। एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज के अगले कुछ महीने बाद एप्पल ये कहे कि मैंने एक AR हेडसेट निकाल दी है, या 2021 के अंदर एप्पल ये कहे कि forget everyone, we got the best AR headset out there. And I think it's inevitable. It's a matter of time. Apple का जिस तरह HoloLens 2 आया है,
इस तरह ही एप्पल का कोई ना कोई AR टाइप स्लैश मिक्स रियलिटी लेंस आएगा ही आएगा. सो ऑल बिग कंपनीज, गूगल ने पहले ट्राई कर लिया गूगल ग्लास के जरिए, वो अनफॉर्चुनेटली पिट गया. उसके अपने लिमिटेशंस हैं, वो एक स्टोरी है गूगल ने क्या मसले किए, क्या. हालांकि गूगल हायर्ड द बेस्ट पर्सन एट दैट टाइम इन द वर्ल्ड जो कि इस प्रोजेक्ट को लीड कर सकता था, लेकिन स्टिल डिडंट वर्क आउट. सो मैं कहने का मकसद ये है कि आई विल नॉट बी एबल टू प्रेडिक्ट. ऑल आई कैन से कि दो तरीके हैं पाकिस्तान में VR आगे जाने के. एक तरीका तो ये है कि आप एकेडमिया के अंदर सीरियस रिसर्च के जरिए इसको पुश करें, द वे we'll trying to do at LUMS, कि आप इंटरेस्टिंग न्यू यूज़ केसेस को लेके चलें और यूज़ केसेस को रिसर्च ड्रिवन करें और उस रिसर्च के जरिए स्टार्टअप्स को बने, और स्टार्टअप्स जो हैं वो रिसर्च ड्रिवन हो, एंड देन दे गो एंड देन गेट सीड मनी, एंड देन दे बिकम द नेक्स्ट $1 billion कंपनी इन द वर्ल्ड, in Pakistan, in the world. That's in my opinion. अगर हमने ये path ले लिया तो 5 साल के अंदर we'll be doing great stuff in Pakistan. Second तरीका ये है कि गेम इंडस्ट्री यूज केसेस को एक्सपैंड कर दे. गेम इंडस्ट्री ये कहे कि अब हमने सिर्फ गेम्स नहीं बनानी, अब हमने सीरियस प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी काम करना है, चाहे वो एंटरटेनमेंट के अंदर हो, चाहे वो हेल्थ के अंदर हो, चाहे वो एजुकेशन के अंदर हो. आई थिंक उससे भी हम देखेंगे एक मैसिव चेंज आएगा, बिकॉज एक्सपर्ट्स जो पहले ही हैं दे विल बी स्टार्टिंग वर्किंग इन द non-gaming areas. तो उससे भी we'll see a massive change in the way we approach this problem. इन दोनों के जरिए I think we'll be able to move forward and have an impact. बाकी अगर आप मुझसे पूछें कि पाकिस्तान के अंदर कोई बहुत बड़ा ड्रामेटिक चेंज आ जाएगा 5 साल के अंदर VR के अंदर, तो I don't think so that's going to happen in Pakistan. I'm not pessimistic, but I think that's not something कि it's a great thing for Pakistan also. मतलब ठीक है, मतलब it's a good thing to have. AR के अंदर I think we can very quickly move forward, और वो मुझे लगता है ये है कि AR में the magic would happen rather very quickly. So अगर उसमें लेकिन अगर आपने I'm struggling a bit here, because I don't like to sort of answer futuristic questions, but I would say कि दोनों एरियाज में काम किया जा सकता है. VR के अंदर अगर आपका विजन 2025 का है, you really want to innovate and you don't really think कि मैंने किसी का कल का मसला हल करना है, here you go. It's a great area to sort of work in. Why not? ओके परफेक्ट. सो आगे एक क्वेश्चन है आपके लिए सुलेमान, कि आपने ट्रेनिंग सेशन ऑफर किया था UX का 2019 में, क्या आप प्लान करें 2020 के लिए भी कोई ऐसा सेशन? जी, मैंने 2-3 हमने प्लान किए थे. हमने एक VR भी किया था, एक हमने हैंड्स ऑन वर्कशॉप भी करवाई थी. We are just waiting for our project to start, which we really hope would start from 1st of September. और अगर वो जब हमारा प्रोजेक्ट को स्टार्ट हो जाता है, उसके प्रोजेक्ट के साथ हमारे पास एक पूरा इंटर्नशिप प्रोग्राम है, उसके साथ हमारा पूरे का पूरा अवेयरनेस प्रोग्राम है, उसके साथ हमारे पास एक पूरा कॉन्फ्रेंस का प्लान है. तो you'll be hearing from our team very soon in August when our project begins on VR for training वाले ग्रुप पर. लेकिन अगर आप we are more than happy to sort of अगर कोई डिमांड आती है, नीड आती है, तो how to translate that. हमारे लैब के लोग काम करने को तैयार हैं. we are unfortunately थोड़ा सा बिजी हो जाते हैं दायमा चीज़ों के अंदर, and VR it's still not my primary area of interest at LUMS. I do other things in VR, तो पार्ट टाइम फ्राइडे आफ्टरनून हॉबी है, तो इसलिए इतना टाइम मिलता नहीं है, लेकिन we can try our best to sort of support as much as we can. ओके परफेक्ट. सो अब 2 क्वेश्चंस और हम सिर्फ ले सकते हैं क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास. एक और क्वेश्चन है अबाउट द यूजेबिलिटी इंजीनियरिंग. सो समवन इज आस्किंग दैट व्हाट डू यू रिकमेंड फॉर एन IT प्रोफेशनल हु वांट्स टू ट्रांजिशन टुवर्ड्स यूजेबिलिटी इंजीनियरिंग? क्या करें वो? जी, I think usability engineering is something I've really done a lot, and उसके अंदर I also was a computer scientist, and then I sort of went into design and then industrial design and other areas. और उसमें really depends कि आपने usability engineering में कौन से वाला ट्रैक पिक करना है. उसमें भी when you're running a usability test, लोगों के different roles होते हैं. ठीक है, आप you want to be a great researcher जो कि human behavior को understand करता है और देखता ही है कि लोग कैसे react कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को, और how do you sort of observe those people. So उसके लिए I think you can start running informal. If you Google online, you will learn a lot about gorilla usability testing. कि आपने घर के अंदर, कमरे के अंदर कैसे टेस्टिंग स्टार्ट करनी है. आपका ये वेबकैम है, उसके जरिए आपने कैसे टेस्टिंग स्टार्ट करनी है. So I'll
जस्ट स्टार्ट विद योर ओन प्रोजेक्ट। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप मेक श्योर करें कि हर प्रोजेक्ट की टेस्टिंग हो। अगर आप कंपनी में काम करते हैं तो मेक श्योर करें कि आपके हर प्रोजेक्ट की टेस्टिंग हो। यू डोंट नीड अ लैब, यू डोंट नीड 5 कंप्यूटर्स, एक मोबाइल फोन, एक आपके पास लैपटॉप विद अ वेबकैम, और एक आपके पास डू इट योरसेल्फ स्टैंड, एंड यू कैन स्टार्ट यूजेबिलिटी एंड रीड बुक्स। किताब से काफ़ी मदद मिल जाती है, अगर किताब इज़ प्रीटी हेल्पफुल। हम थोड़ा कोशिश करते हैं, भागते हैं किताब से। मेरी कंप्लेन हमेशा अपने आप से भी रही है, अपने बच्चों से भी रही है कि इट हेल्प्स अ लॉट। अगर आपने फील्ड शिफ्ट करनी है ना, तो उसमें बुक्स हेल्प अ लॉट। ये आपका जो कर्व है उसको बहुत रिड्यूस कर देती है। इफ यू डोंट माइंड, आसिमा, एक सवाल आ रहा है बार बार, वो ये कि कैन पीपल फ्रॉम इस्लामाबाद वर्क ऑन द प्रोजेक्ट। तो आई वुड क्विकली आंसर दैट क्वेश्चन। वो ये कि बिल्कुल कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द कोविड-19 सिचुएशन। लेकिन उसमें से दो मसले हैं। मसला ये कि आप किस किस्म का काम करना चाहते हैं, बिकॉज इफ यू नीड एन एक्सेस टू द हार्डवेयर, उसमें हमारे लिए मसला हो सकता है कि हम आपको हार्डवेयर की एक्सेस नहीं दे सकते, बिकॉज दैट्स सॉर्ट ऑफ मोर सिचुएटेड इन द लैब। लेकिन आपको रिमोटली काम करना है in a different use case, and you're an animator, you're an illustrator, you want to work in 3D space as a modeler, as an architect, yeah, sure, why not? You can become a part of the projects we work on. Yeah. Okay, perfect. Thank you so much, Suleman. That was an amazing session. I think हमें अभी इसको end करना पड़ेगा, although I know questions बहुत आ रहे हैं and we would love to answer them. हम एक काम करते हैं, Facebook Innovation Lab या जो लम्स के ऊपर opportunities हैं, उनका link जो है हम after the session comment में नीचे paste कर देंगे। तो जिन लोगों को questions ये हैं कि उन्होंने कैसे join कर सकते हैं लम्स को, कैसे access कर सकते हैं, please आप उन links पे जाइएगा और आप please sir को भी directly contact कर सकते हैं and you can talk about that. So with this, we will end our session. That was an amazing session. I'm super excited about everything, and I would love to visit LUMS when I'm in Pakistan and see everything. So, जी आपके और जो भी comments आ रहे हैं लोगों के, हम लोग उसको ना आप comments में reply करेंगे. Please live हम नहीं कर सकते अभी, sorry. So please take care everyone. Thank you so much for this. Allah Hafiz. Bye bye. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.